Okay, guys, are we live? Are we live? Let me, as usual, check if we are actually live, and then we will get to our usual business, cooking some things up, learning to code, and Kulja YouTube. Yes, I think we are live. I think we are absolutely live. So let us again wait for a few minutes to see if more people come in. Let's start at like 9:03. 2 minute time लेके. Okay, hello. We have some people. We have some people. तो मैं अभी तुम लोगों को चॉइस देने वाला हूँ कि आज करना क्या है एग्जैक्टली. ठीक है. अभी तुम बताओ कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था. लास्ट टाइम हमने एक बॉल बनाया था. हमने एक बेसिकली दो फंक्शन लिखे थे. एक मूव करने के लिए, एक बाउंस कराने के लिए, और हमने एक बॉल बनाया था जो कि हमारे स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट चलता था एंड बाउंस ऑफ करके ऑपोजिट साइड चलना स्टार्ट करता था. लेट्स सी दिस अगेन. तो दिस इज हाउ आवर बॉल यूज्ड टू लुक. ठीक है. बट अभी इस चीज को दो तीन चीजें कर सकते हैं हम लोग. यू गाइस चूज व्हाट वी कुड डू. या तो हम कुछ और दो तीन अलग अलग चीजें बनाने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर what we can try is try to rotate this and make this look like a ball जो कि vertically bounce हो रहा है. ठीक है. अब उसमें तुम बोलोगे अलग क्या होगा. बस जो टर्टल को थोड़ा आरटी घुमा देंगे पहले ही. इंस्टेड ऑफ राइट जो जा रहा था उसको नीचे कर देंगे. No, I'm saying the ball should replicate an actual ball bouncing, जिसमें मतलब प्रॉपर फिजिक्स लगेगा. फिजिक्स के फॉर्मूले अगर तुमको याद है तो दैट विल बी रियली गुड इसमें. बट उसको हम कोड पे कैसे लगा सकते हैं फिजिक्स को, ये अगर तुम सोचोगे कभी. तो इफ यू वांट टू सी दैट हैपन, तो अगेन देखो, मैंने भी नहीं किया. मेरे दिमाग में आइडिया है कि ओ शिट, ये कर सकते हैं. एक असली बॉल की बाउंस करने का एक फ्लोर पे, उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं. उसको हम बेसिकली रेप्लिकेट कर सकते हैं थ्रू कोड. Just like this ball bouncing off. What is this like? This is like a ball in a space between two vertical walls, और हर जगह पे जाके इलास्टिक कोलिशन हो रहा है. It's just doing this. But if it's on earth, उसको ऐसे छोड़ देंगे तो it's not gonna be उतना simple. पहले तो वो ऊपर उसका स्पीड कम रहेगा, नीचे आकर स्पीड बढ़ेगा. फिर स्पीड ज़्यादा लेके ऊपर जाएगा, हमें घटेगा, फिर एक से जीरो होकर फिर वापस नीचे आएगा. ऐसे होगी एंड इसका हाइट हर बार कम होता जाएगा. ये एक ऑप्शन है हमारे पास. दूसरा ऑप्शन है हम अलग चीजें देखें और अलग अलग पैटर्न्स बनाए, या फिर वो जो हमारा गन से शूट करने वाला चीज था वो बनाए. अब तुम लोग बताओ करना क्या है. मेरे को और पर्सनली लगता है सबसे ज्यादा मजा इस बॉल बाउंसिंग में ही आएगा, जो कि एक एक्चुअल बॉल कैसे बाउंस करेगा उसको रेप्लिकेट कराने में. बट अगेन यू गाइस टेल मी व्हाट यू वांट.
Okay, guys, I will need some responses in the chat. मैं legit फोन पे chat देख रहा हूँ और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है. You guys have to choose the bouncing ball, the actual real bouncing ball, or new patterns, or a bullet. Now you guys have to tell me. Is the stream bugged or something? What's Turtle? Turtle is a module in Python that we have been using since, I guess, one day. Last session में हम लोग Python में ये Turtle module introduce किए थे. This is very much like the logo that you might have done in your kindergarten or maybe like first, second, third, fourth standard का computer class. It is a module that you can use to draw things basically. Okay, even like create simple games and stuff. So if you guys don't say anything, I'm just gonna pick my own favorite, the bouncing ball in this case, and I'm just gonna get done with it. Okay, finally we have something cool. We're just gonna get started then. ठीक है, देखो तो ये वाले पार्ट्स हमको खास चेंज करने की जरूरत नहीं है. मतलब सॉरी, ये वाले पार्ट्स तो बीच में से ये सारी चीजें शेप साइज भी रखने देते हैं क्योंकि बॉल सर्कल होगा. मेक सेंस. शेप साइज भी 5 को थोड़ा 4 कर देते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं बॉल को. और ठीक है, बाउंस को थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे. मूव को भी हटा देते हैं, तो हम एक और नया मूव बनाते हैं. तो इसके लिए हमें अगेन हम एज यूजुअल पेंट खोलेंगे, समझेंगे कि करना क्या है एग्जैक्टली. तो आई गेस तुम लोगों को यार थोड़ा बहुत फिजिक्स तो याद होगा, मुझे बहुत खास याद नहीं है, बट आई ट्राई टू फिगर इट आउट. ये हो गया हमारा बॉल. इसके ऊपर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम करता है कितना, जी. ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन काम करता है जी. यहाँ पे होगा एक मतलब फ्लोर. यहाँ पे बॉल टकराएगा तो जिस स्पीड में टकराएगा उसी स्पीड में वापस ऊपर की तरफ जाएगा. अगेन हम इलास्टिक सोच रहे हैं इसको. एम जी इज द फोर्स, जी इज द एक्सेलरेशन. यस, एम जी फोर्स लगता है, बट इसका मास भी m है. यहाँ पे एम जी वो लग रहा है, तो द एक्सेलरेशन कॉस्ट इज एम जी बाई एम, दैट इज इक्वल टू जी. तो नीचे की तरफ जी होगा. ठीक है, मेक सेंस. और इसका क्या होगा, इसका एक वेलोसिटी वेरिएबल होगा जो कि इनिशियली 0 होगा क्योंकि हम उसको जस्ट इसे रिलीज कर दे रहे हैं. और क्या चाहिए हमको, ये हमारा वेलोसिटी एक वेरिएबल होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा. एक्स कोऑर्डिनेट से एक्चुअली मतलब नहीं है क्योंकि ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे, तो फिर वो एक्स कोऑर्डिनेट में मूव नहीं कर रहा, हमको बस वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई कोऑर. ये एक चीज़ होगा. इसका वैल्यू भी इनिशियली 0 होगा क्योंकि हमारा जो टर्टल का सिस्टम है वो मिडिल में उसका 0 से स्टार्ट होता है. देखो v कभी भी हम लोग, अभी आपको क्या अपडेट क्या कर रहा है, क्या चेंज कर रहे हैं. द बॉल विल मूव डाउन व्हेन वी चेंज दिस वाई कॉर्ड. ठीक है, अब वाई कॉर्ड किस हिसाब से चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, मतलब मेरे को एग्जैक्टली मेरे को अकाउंटेबल मत पकड़ो कि एग्जैक्टली क्या होता है नहीं होता है, बट जनरली फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि वेलोसिटी अगर किसी का 10 है तो 1 सेकंड में यहाँ से 10 यूनिट्स आगे पहुँच जाता है, राइट. अब वेलोसिटी अगर 12 है तो वो 1 सेकंड में यहाँ से 12 तक पहुँचेगा.
वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमको बेसिकली तीन चीजें रखनी है, वाई कॉर रखना है, एक वेलोसिटी वाला वो रखना है जो कि इनिशियली जीरो होगा, वाई कॉर भी इनिशियली जीरो होगा, और एक एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू हमें पता है कि क्या है, हमेशा जी है, जिसका वैल्यू हम यहाँ पे 10 ही पकड़ते हैं, फॉर द सेक ऑफ दिस 10 ही रखते हैं। तो इनिशियली क्या करना है, हमको ऐसा एक बनाना है, हमको वो मूव वाला जो हमारा फंक्शन था, हम एक मूव फंक्शन बनाएंगे जो कि नीचे की तरफ मूव करेगा, और मूव कैसे करेगा कि उसका वो बोलेगा कि अच्छा तुम यहाँ पे हो, तुम अपना यहाँ से तुम अपना पोजीशन और नीचे चले जाओ, और नीचे कहाँ तक जाना है तुमको, नीचे तुम्हें जाना है जहाँ भी तुम्हारा अभी का पोजीशन है, वाई कॉर जो है उसको चेंज करो, वाई कॉर प्लस वी कर दो, जो भी वेलोसिटी है, तो एक सेकंड में वो, या एक यूनिट ऑफ टाइम में वो अगर यहाँ पे है तो उसका भी जो वेलोसिटी है वो उतना दूर आके पहुंचेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर वो यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी 10 है तो 10 यूनिट्स आगे पहुंचेगा, अगर 12 है तो 12 मिनट्स आगे पहुंचेगा, और हर एक सेकंड में ये जो पहली बार अगर 10 गया, सेकंड बार 12 गया, उसके आगे 14 जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सेलरेशन दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 2, यहाँ पे 10 होगा। तो पहली बार में वो अगर पहले सेकंड में अगर वो जीरो गया तो अगले सेकंड में 10 जाएगा, अगर वो 20 जाएगा, फिर 30 जाएगा, दैट इज हाउ इट इज गोना गो डाउन। ठीक है, हम एक बार सिंपली लिख के देखते हैं कि डी, अब अगेन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में इसको पार्ट करते हैं। मूव में टर्टल अप डाउन डिक्रीमेंट इन वाई कॉर एंड डाउन टू अप इंक्रीमेंट इन वाई कॉर। एक्चुअली यू आर गेटिंग इट राइट, बट इसमें कुछ कन्वेंशनल डिफरेंसेस है। दिस इज नॉट लाइक दी तुम्हारा यूक्लिडियन स्पेस कि इधर प्लस और इधर माइनस है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ऐसे होता है कि दिस इज एक्स पॉजिटिव एंड दिस इज वाई पॉजिटिव, दिस इज एक्स नेगेटिव एंड दिस इज वाई नेगेटिव। तो वही तुमको बस उल्टा कर लेना है। ठीक है, वाई का पॉजिटिव इधर है नीचे की तरफ। तो मूव में हमें क्या करना है, मूव टर्टल कर दिए तो हमें क्या करना है, टर्टल डॉट वाई कॉर, वाई कॉर नहीं होगा, सेट वाई कॉर होता है। अब देखो अगेन हमको एक चीज मिला है जो भाई हमको नहीं पता भाई कैसे लिखना होता है, भाई कोई आइडिया नहीं है, बाहर ऐसे लिख के देखते हैं, टी डॉट सेट वाई, सेट वाई से क्या होता है, सेट दी कोऑर्डिनेट सेट वाई -10। ओके, तो हमें बेसिकली वही बता रहा है, सेट वाई पे हम जो भी डालेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा। ठीक है, हमको मिल गया जो फंक्शन चाहिए था हमको। देखो हमको नहीं पता था सेट वाई को और क्या लिखना होता है, सेट वाई हमको मिल गया। सेट वाई में क्या डालना है, टर्टल डॉट वाई कॉर अभी जो है प्लस वेलोसिटी। ठीक है, मेक सेंस। अभी हम थोड़ा बाहर वो भी उसको भी कर लेते हैं कि वेलोसिटी का इनिशियल अमाउंट 0 है, फिर एक्सेलरेशन इज 10, और हमको क्या चाहिए, वाई कॉर्ड तो इनिशियली 0 है, उसका हमें बोलना नहीं पड़ता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वहीं पे चालू होता है। ठीक है, हमको ये करना है अभी। देखो बाउंस वाला चीज भी हमको थोड़ा चेंज करने की, अभी वो ऊपर नीचे जाएगा, राइट, तो ऊपर नीचे वो जाएगा कैसे, तो अभी हमें एक्स कॉर का ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस देखना है वाई कॉर के +600 से ज्यादा तो नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर वो बाउंस करके कहीं और तो नहीं पहुंच जाएगा, मिडिल से छोड़ेंगे क्योंकि हमको पता है अगर इन नॉर्मल ग्रेविटी या कोई भी ग्रेविटी हम अगर ऐसे कोई बॉल छोड़ दे तो वो कभी ये यहाँ तक क्या आएगा, मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर नहीं पहुंच जाएगा, तो ऊपर का हमें नहीं सोचना है, सिर्फ नीचे का देखना है कि अगर ऐसा हो गया ना तो हमें टर्टल को 180 डिग्री घुमा देना है। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री घुमाने से बेटर क्या हम कुछ कर सकते हैं, मे बी हम वेलोसिटी को रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज क्यों बोल रहा हूं मैं, फिर हमें मूव के लिए दो अलग चीज नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ घुमा देंगे टर्टल को, कि अगर हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे पहले बॉल नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, तब जो मूव वाला फंक्शन था दैट वाज, और सपोज वेलोसिटी इज 50 फॉर एग्जांपल एकदम एंड में, तो
if it is 50 at the end and it is coming down, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y core जो भी है +50 कर रहे हैं, तो वो और 50 नीचे आ जा रहा है. अब बाउंस होने के बाद इफ वी जस्ट टर्न द टर्टल अराउंड, ऊपर की तरफ कर दें, तो देन अभी जैसे वो अभी सपोज वो बॉल यहाँ पे पहुंच गया, बाउंस होने वाला है, तो अभी वापस जब मूव वाला वो चलेगा तो इट विल जस्ट ऐड 50 अगेन, वो इसके नीचे पहुंच जाएगा. दैट डजंट सॉल्व. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मूव डाउन के लिए ये फंक्शन है, और फिर मूव अप के लिए हमको y core -50 बनाना पड़ेगा. सो व्हाई नॉट जस्ट कीप इट y core +v, एंड जब भी वो बाउंस करे हम v इक्वल्स टू -v कर देते हैं, कि v का साइन उल्टा कर दो. लेट्स सी. अगेन ये मेरा इंट्यूशन है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल वर्क, बट दिस शुड वर्क. मेरे को देख के वही लग रहा है. ओके, -v ऐसे नहीं लिख सकते, -1 × v लिखना पड़ता है. एंड v नीड्स टू बी ग्लोबल. इसमें भी ग्लोबल v, क्योंकि v का स्कोप इस फंक्शन के बाहर है. ग्लोबल v और मूव में ग्लोबल v एंड a दोनों होना है एक्चुअली, क्योंकि a भी हमें चाहिए होगा. अब हर एक बार मूव करने के बाद व्हाट इट हैज टू डू इज इट हैज टू चेक टू थिंग्स. वन, क्या ये बाउंस करने वाला है, चेक इफ इट्स बाउंसिंग, इफ इट्स ऑलरेडी नियर द ग्राउंड. सेकंड, व्हाट वी कैन ट्राई टू डू इज वेलोसिटी को अपडेट करना होगा अभी हमें, कि v जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू से a अमाउंट बढ़ जाएगा. ठीक है. सी, हमने वहां पे जो वेलोसिटी इन्वर्स किया था ना, इट विल वर्क आउट ग्रेट फॉर अस. कि यहाँ पे अगर फ्लोर है एंड द बॉल इज गोइंग अप, तो वेलोसिटी को हमने ऐसे दो अलग फंक्शन ना बना के वेलोसिटी का वैल्यू माइनस कर दी, कि -60 पे जा रहा है वो अभी ऊपर. अब जब हम +10 करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्पीड ऊपर जाने का घटते जाएगा, और एक पॉइंट पे जाके वो 0 हो जाएगा. मेक सेंस. और फिर वो नीचे आना चालू कर जाएगा खुद से ही वेलोसिटी का साइन चेंज करके. This is how I think it should work, but we will find out if this works or not. Okay, let's try running this and see what happens. Obviously bugs and errors आएंगे, but we'll figure this out. There is a problem, bounce missing one argumental statement on turtle. अच्छा, makes sense. मैंने argument नहीं डाला था. And this is not moving. Okay, that's interesting. Something needs to be done. Okay, why is it not moving? I have to figure that out. Let's try like t dot set y 200. Let's see if that works. Okay. Okay, I made one mistake. Apparently, I guess Turtle has updated this. They have made the turtle, like they have built this again. Euclidean जो कि पहले नहीं हुआ करता था. Then they changed it कि नीचे होगा plus, and then they again changed it अभी apparently. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस माइनस इक्वल्स टू -600 कर देना है, एंड व्हाट इज ए को नीचे की तरफ कर देना है. अभी इट्स वेरी इंट्यूटिव कि एनीथिंग मूविंग अप इज पॉजिटिव, एनीथिंग मूविंग डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव. बट व्हाई इज इट नॉट मूविंग? Okay, got it. Such stupid. Okay, is that to global VNA? Then we have to do a while loop. Obviously, I did not think about that. We have to do a while loop on the move. We can do it here, or we can do it here also. I'm pretty sure. नहीं तो it just moves once and stops. While true, and all these things get inside the while loop. This should work. As you can see, it's sort of working. Let's change this 600 to 400, and let's
bring down the gravity a little bit. नहीं तो it's falling down way too quickly. As you can see, it is mimicking a very real ball. This is like with very low gravity, but as you can see, I will just take this down a little bit because it's not visible. Okay. Alright, I hope that makes sense. Let's turn this to even less, minus 300. What else can we do? We can add a small upward velocity to it, like 20. So now the ball will be thrown up, something like that. That. That's pretty cool. That is, in my opinion, pretty cool. Now, what else can we do? We can do it like we can mix these two concepts, the bouncing ball on the floor and the ball bouncing on the walls, to maybe make a very real situation जहाँ पे the ball is inside a room and it can bounce off the walls and the floors and see what happens. Basically this is basic projectile motion. जो चीज़ें हमने y axis पे की उनको सिमिलर x axis पे आगे सिमिलर चीज़ें भी नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें करनी क्योंकि x axis में there is no acceleration. ठीक है, तो instead of move, so is v, wherever there is v, will change the v to vy because that is the y-axis velocity. This is at this point turning into a physics class, but that is fun. Physics is to be really fun. And we will also use a vx that is initially 0 for this case, or let's have it like 20. We have to check bounds in even more cases. We have to check the last time what we did, like turtle dot x core. We have to check like if the x coordinate is more than 500 or turtle dot x core is less than equals to minus 500. So this builds the two walls to the sides. ठीक है, build the two walls to the side and हमको क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो हमको vx equals to vx minus 1 into vx कर देना है. हमें यहाँ पे ग्लोबल vx भी डालना पड़ेगा एज यूजुअल. यहाँ पे ग्लोबल vx डाल देंगे. सो यहाँ पे देखो, as soon as we do this ना, it will make sense कि हमने यहाँ पे तुम्हें लग रहा था कि टर्टल नीचे आ रहा था, why don't we just do right 180 और left 180. अभी you will understand कि अगर ऐसा wall है, यहाँ पे ऐसा wall है and the ball is going like this, striking it at this angle. If we just do 180, that will be very unnatural कि it will come, bounce like this and go back like this. That is very unnatural. It is supposed to be like this and this, right? On a very natural habitat. So if you do this, whenever it hits the wall on the right or the left, any vertical walls, it's just gonna reverse the x velocity, the velocity along the x-axis, and it will not change anything about the velocity of the y-axis. Okay. This does not very well take in consideration about the corners, like what happens if the ball touches the corner, but that is again, as we know, very rare case. So let's just see if this works out. This should work out in my opinion, but let's see. Okay, I see a problem. We did not update the x coordinate. So there is another, it's called another function that is called set position. There you can basically, this is basically set x and set y together, and you give in the x and the y coordinate, and that is what that should work.
Yes. Now you can see, we can't see the walls, but we can at least see this is working exactly how I wanted to. It will slowly die down. Okay, that's a pretty weird behavior. There are some bugs in the code, obviously, because the ball here is not exactly a ball, it is honestly a dot, right? Honestly, our turtle is a dot. But what is happening, I'll tell you. Our ball is coming here, but our dot is here. This circle ka position is this only. So our ball is actually coming till here until the dot is crossing this line. That is not what we want. That is definitely not what we want. So what can we do? We can improve the collision parameters. Instead of checking if the dot has crossed, check if the dot is here. Instead of like checking at minus 300, check at like minus 290, because this might be a value of 10. How will we know that? I have no clue how will we know that. But let's try to figure it out. Let's have another variable called margin, and let's set it to 10 for now. Let's just set it to 10, and we'll be like, okay, check for, not for this but for plus margin, and for this also this will be minus margin because we're checking on the right hand side, and for this it will be plus margin because we're checking on the left hand side. This should make some improvements. I'm not sure if 10 pixels is enough. I'll just go with a little more, maybe 50. We'll have a bigger margin, but that should give us some better results. At least it should not die down. That is what I want to see. The ball should, at some point, I guess, come to a complete stop. Or just keep moving like horizontally, because all the. Okay, there is still some problem because it still keeps going down. I think the margin needs to be even bigger. Or it might not be a problem with the margin at all. So these are things that we have to figure out. Okay, our ball has been broken. It's not working properly. Let's just see. Let's try to understand where this went wrong. Let's try to understand why would it still try to keep going down. I guess at one point the velocity that is getting is so less, it is not making very far up, and then after we are updating we are checking key, okay, see if this is working, right? After we are getting it down there, then we are telling it, okay, see if it is bouncing, bro. See if it is bouncing, bro. So what we can do is we can use this bounce wala feature. Instead of using like x core, y core, we're just gonna feed it. Okay, we're just gonna feed it x core and y core. We're just gonna call it x core and y core. So we don't need the turtle here. So then what we can do, instead of doing this, you can be like, okay, x core and turtle.y core. And before doing the set position, we will have to check if this is working. Because there's a very fine margin, because if it has to like go down from here, if it has to go down like 10 units, but it has only 5 units here, what do we exactly do? Or 5 is a uniform section. What if it has like
2 units available, so it has to go down 2 and then come up with, so that's the problem. If it, so what we can do is, if it is going down at maybe 50 and there is not enough space, if this is less than 50, what we can do, we can just not do anything and make it go back. Okay, that makes a lot more sense. Again, not very ideal, but it makes sense. So what we need to check is, we do this bounce with x core plus vx and y core plus vy. So we will know exactly, okay, is this out of the bounds? After we update this, will this be out of the bounds? If this will be, we will know with this bounce and it will be reversed. Okay, then we set the position in terms of whatever we want. Again, this should work. I'm not entirely sure, but this should work. There is a little problem. Float object is not callable. Okay, I need to remove the, sorry, I need to remove the parentheses because they are just normal variables now. They're not functions anymore. This should solve the problem of the ever sinking ball. Okay, there seems to be a problem that the ball keeps going higher. The ball just, it's gonna bounce off the screen at some point. Okay, we have solved one problem and we landed with another problem. It is very exciting, guys, honestly, but we have to figure out what went wrong. How about if we, before inversing the value, we just set it back at the bottom, exact bottom, like, but we do not have the turtle. We need the turtle. X core and Y core. We'll have to give turtle X core and Y core. Sorry, I am horrible at spelling. Turtle. We'll need the turtle and we go like turtle dot set y minus 300, and we do something similar. We have to check both of these differently then. Equals to set x 500 if x core is greater than equals to 0, then set turtle x to this, else turtle dot set x equals to minus 500, and then just reverse it. Let's see if that works. That's another, oh, amazing new problem. That's an amazing new problem. Okay, what is happening over here? So there's something that we need to figure out. So I would really wanted to show you like what do building actual projects and solving actual problems. This is not really a problem, but building actual projects, what does it look like? There has to be a lot of errors. बहुत सारे errors आते हैं and you have to figure them out. Okay, so this is not working very clearly. There needs to be something else. So abhi the main problem that we are facing, let's track back, is that our ball is bouncing off the screen. The velocity is too high. How about we make this not an elastic, uh, what's it called? Not an elastic collision. Because yeah, an elastic collision will make it like go at the same height,
But because our code does not exactly let it touch the base, it is becoming like some collision that is making it gain more speed. So instead of like 1, how about we damp the velocity a little bit? We make it an inelastic collision, and this should be a little more realistic. Let's see if we still have this sinking ball problem, because last time it was flowing on the screen towards the top, so we did not know if the ball would sink. But it seems to have plateaued at this particular point and it's not going down anymore. That's because our value of, there is a threshold to what, uh, how low it can go, and that is basically why this is happening. We can go a little more frantic, like we can increase the x velocity to maybe like something like 60 and the y velocity to something like 40. That'll be interesting. Okay, that flew off. That's gonna come back at some point. Yeah, so this is basically how you understand, like वो game होते थे ना. There's a platform and you try to launch the ball back again. It comes coming back, and you get the platform to keep it above. Don't let it touch the water. Or don't let it touch the fire. Whatever. Those old games are basically made like this. This has to be the ball. There has to be obstacles upward, and then you need to have a controllable, a controllable, basically that thing. Sorry, a controllable platform to bounce the ball off. Okay, so that seems very interesting. What else we can do? What we can make it even better? We can make two balls. What's better than one ball? Two balls. You can be like t2 dot t2 equals to turtle dot turtle. That makes a new turtle. Then we go t2 dot we just copy these things because why not. T2 shape circle, T2 shape size 4, and we also did what, t dot pen up. We have to do t2 dot pen up, otherwise it will start drawing. That is what we need, I guess. Let's okay, now this is vy1 and vx1 is same for everyone. Let's just assume that because the gravity is same for everyone. We're gonna have vx2, vy2 and vx2. Let's decrease the x value a little bit from 6, and there's this one as 15. The y value can be for 120. Let's have the x value of -6, and the y value for this can be 8. We are basically trying to make two balls. So we also have to do, now we need this while loop to be outside, because we need these things happening one by one, like move for both of them, right? So we'll do while true move t and move t1, sorry t2. यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, like this is vx, there is no vx anymore. So how about we just add these as the arguments, because this is common for everyone but these two are different for everyone, right? Yeah, let's just do that. Vx vy, then we just need global a, and let's get rid of this. Let's call y called vx and vy.
You don't need the turtle. We can do that. We can do that. Okay. But if it's not inside a loop, that will be a problem because the same Vx value will go in every time. Then this thing has to be outside somewhere else, like somewhere inside this loop. So that is another blocker we are facing at this point. Now I'll leave this to you. Okay. I'll probably need like 5 minutes to solve this, maybe even less than that. Uh, but I will leave this to you. You can get this code. You can literally copy this whole code. The first part is same. I'm letting you see this last part and remove some extra spaces, and you can see what it exactly looks like. So give it a try and try solving this so that we can use two balls, and after we have like two balls rotating around and jumping around on the screen, we can even check for whenever the balls are colliding with each other, and we can even make a like proper collision representation, implementation of a proper collision and how it should look like in real life. Okay, so yeah, that will be it for today. We're ending the session a little bit short because there's honestly not much that I can start right now and finish, because अभी मैं अगर वो बुलेट वाला चीज़ या किसी और चीज़ पे चला गया तो it will take a lot of time. So let's finish the session at this point. Thanks a lot for joining, and I'll meet you guys again